Hello everyone and a very good morning to all of you and welcome to BYJU'S Exam Prep, the most comprehensive preparation app for all exams. So as we all know that daily at 11 a.m. in the morning we come up with the Hindu analysis. जैसा कि आपको पता है कि हम लोग 11 बजे सुबह में the Hindu analysis लेके आते हैं और we discuss both in English and Hindi language. So हम लोग अंग्रेजी में और हिंदी दोनों में discuss करते हैं. So if I am audible and visible, just write in the comments, yes sir, you are audible, so that we can start our session. Yes, good morning everyone. Good morning guys. Okay. जैसा कि आपको पता है, today is 27th September, Tuesday. Okay, and we are discussing today's the Hindu analysis. जैसे कि आपको पता है कि आज 27 सितंबर है और आज हम लोग उसकी the Hindu analysis discuss करेंगे. First, on the top, there was an article here. If you see, President inaugurates Mysuru Gala. We had discussed this in yesterday's class. ठीक है, तो हम लोग पिछली वाली क्लास में ही नहीं, yesterday on 26 September, we had discussed about this event of Mysuru, right? So you can go and watch that video to get to know more about that. Now, the first page here actually is a political article, so I am not discussing it. You should also avoid. From exam point of view, it is not important. This one is important, and that is why I think you should be knowing about it. In fact, there has been today there was an editorial also in the Hindu based on this topic. तो ये वाली topic important है. इसमें है Italy tilts right as voters line up behind Giorgia Meloni's party. So actually ये कहा जा रहा है कि right wing or you can say prime minister or you can say political party has got majority in Italy. So that is why it was very much in the news. So it says a party with neo-fascist roots has won most votes in Italy's national election, setting the stage on Monday for talks to create country's first far-right led government since Second World War. Okay, and Giorgia Meloni is at the helm as Italy's first woman premier. ठीक है, तो इसमें ये कहा जा रहा है. So neo-fascist, what are these words actually? See, you can see these types of articles were also coming in CNN. Also, Giorgia Meloni claims victory to become Italy's most far-right prime minister since Benito Mussolini. Okay, what is that? Yes. So basically, you must have heard about these two names, and these two are very famous names. One is called as Benito Mussolini, another is called as Adolf Hitler. So Adolf Hitler was from Germany. ये जर्मनी से थे. और बेनेटो मुसोलिनी इटली के प्राइम मिनिस्टर थे, हेड थे. So these two were actually having alliance in World War II. Okay, yes. ये दोनों का अलायंस था वर्ल्ड वॉर 2 में और बेनेटो मुसोलिनी की पार्टी का ही नाम था फैसिस्ट पार्टी. And that is why people having similar ideologies are called as fascist or fascism. Similarly, Adolf Hitler's party name was Nazi Party. And that is why people having similar ideologies are called as Nazist or Nazism. These are the words or ideologies being mentioned. Okay. So the ideologies of Benito Mussolini or fascist ideology or fascism ideology, so very similar to that is the ideology of the new prime minister of you can say Italy. That is what the foreign policy expert says. ठीक है, सब मेरा ओपिनियन नहीं है. These are what are the things coming in the article. That is what I am explaining. ठीक है. So a party with neo-fascist means it's a new version of fascism or fascist political parties or similar ideologies. That is what the author has written. Has won it. I can say has got the majority, and Giorgia Meloni will be the first to be the first prime minister, first female prime minister, as well as the first after Benito Mussolini to having the same similar ideologies. That is what the articles have been you can say publishing in different newspaper. Okay, that is what it says. देखो जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरा ओपिनियन नहीं होता है, just I explain the things whatever is in the news. Okay, yes. Okay, now let's move on to the second half, because our first half में if you see it no any article is important. Okay, so these are not important, these are political articles, but this one you should be knowing it. Okay, now let's talk about the second half of the Hindu newspaper. Second half, the Hindu के second half में हम लोग चलते हैं. So this is also a political article, you can skip it. These two we will be discussing it because these two are important. ठीक है, ये दोनों हम लोग discuss करेंगे इसलिए कि ये दोनों
इंपॉर्टेंट है. First it says rupee drops to a record low of 81.67 against a dollar. ठीक है. So this was got published yesterday कि $1 is equal to 81.67 rupees. ठीक है. I today searched in the morning. आज मैंने सुबह में सर्च किया. So I saw it 81.33. मतलब वही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, तो देख लो, आप यहाँ देख सकते हो, है ना. So yesterday this was yesterday 81, I think somewhere around 81.67. Today in the morning I saw it somewhere around 81.33. ठीक है. So if you see it from 18 September the rupee is getting depreciated. आप बोले सर ऊपर जा रहा है, हाँ, जितना ऊपर जाएगा उतना डेप्रिसिएशन होता है. ठीक है. So if $1 is 70 rupees, $1 is 80 rupees, so this is more depreciated. You understand? Okay, rupee is getting weakened. So especially if you see it since 18 September, अगर आप 18 सितंबर के आसपास से देखोगे तो जनरली जो है रूपी डेप्रिसिएट कर रहा है, बस कल से आज के बीच थोड़ा सा बेटर पोजीशन में. Yes, that is what it is being mentioned. I can see this is from the Google I have searched. So that is what the general trend is in the last you can say it's 9-10 days. It has become more, it has got more depreciated. ठीक है, ये इसका मतलब हुआ. Now there are a lot of reasons and that is why I am giving you a question based on it. So read the question carefully and then answer it. Which of the following can be considered as the reason for depreciation of rupee? Your options are decline in exports, rise in import bill, withdrawal of foreign portfolio investment, all of the above, none of the above. ठीक है. अब आपको ये बताना है कि डेप्रिसिएशन यानी रूपी जो कमजोर हो रहा है डॉलर के मुकाबले, उसके कारण क्या क्या है. डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का गिरना, इंपोर्ट बिल बढ़ना, या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करना, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव. व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन? बिकॉज इफ यू सी क्लैट 2020, अगर आप क्लैट 2020 देखोगे, सो दे हैड आस्क्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन इकोनॉमिक्स. ठीक है. एक पूरा एंटायर पैसेज, द एंटायर वन पैसेज वाज बेस्ड ऑन economics. That is why I'm saying yes. So majority of the people are saying D. Yes, Falguni, Riya, Karin, Pomar, Preeti, Pok, Muskan, Khushi, Samhita, you all are right. Huh? So basically the right answer is all of the above. So ये सारे कारण हैं जिसके कारण रूपी कमजोर हो रहा है डॉलर के मुकाबले. पहला है decline in exports. Yes, rise in import bill. So okay, I am just telling you, go and find out why these things are happening. Reasons why these things are happening. So we'll be discussing it in detail in the paid classes, but I am giving you as a homework here that go and find out why these things are happening, because of which we are witnessing the depreciation of rupee. तो आप इसको जाके पता कीजिए, फाइंड आउट कीजिए कि रुपया कमजोर हो रहा है ये तीनों मेन कारण के कारण, और इसका कारण है क्या, ये तीनों चीज क्यों हो रही है. गो एंड फाइंड आउट. ठीक है. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग यू. ओके. एंड देयर इज अ रिक्वेस्ट गाइस, वी आर सीइंग ओनली 13 लाइक्स, 42 इज वाचिंग. एवरीवन प्लीज प्रेस द लाइक बटन. एवरीवन फटाफट. यस. ओके. नाउ लेट्स देयर इज अ स्मॉल अनाउंसमेंट दैट वी वांट टू हाईलाइट इज दैट फ्रॉम 2nd October we are going to start a CLAT 2023 crash course type series on our YouTube channel. ठीक है. Every Monday, Wednesday, Friday and Sunday at 9 PM it will be happening. 9 बजे रात में YouTube पे सेशन आएगा. Monday, Wednesday, note it. Monday, Wednesday, Friday, Sunday at 9 PM in the evening, or you can say in the night. Starting from 2nd October on the same YouTube channel. So please subscribe to our YouTube channel. The video in which you are watching, उसको आप subscribe कर लो YouTube channel को. Please everyone subscribe to our channel. Yes. Because from 2nd October we'll be having this crash course. Okay. Yes. Now there was actually a small thing that I want to show is on the second half of the first page there was a beautiful picture of Neilgiri Hills actually, है ना. If you see the Neilgiri Hills has been receiving rainfall and all. So this is just mist floating in the air. Just wanted to show it's a beautiful scenery. And Neilgiri Hill is here somewhere, है ना. Somewhere on the deep down Karnataka, south of Karnataka you can say, है ना. At the border of Karnataka, Tamil Nadu, Kerala and all, है ना. So it's a beautiful image, you can see it, है ना. Okay, now so we have discussed this one and this one. Now this one is also very very important. In fact there was question this year on Navic. ये वाला इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है. Navic पर इस साल सवाल आया था CLAT 2022 में. I'll be showing you that. ठीक है. So that is why
This topic is very, very important. Center push for Navic system lands smartphone giants on unknown roads. Basically, देखो Navic क्या है? It's very similar to like USA's GPS technology, है ना? It's a navigation system, है ना? Like GPS भी आप जिस तरह फोन में हम लोग का GPS होता है नेविगेशन करने के लिए, अगर आपको किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो GPS के माध्यम से आप जा सकते हो. उसी तरह की टेक्नोलॉजी Navic भी है, ठीक है. सो वेरी सिमिलर टेक्नोलॉजी इज Navic, बट इट इज मेड इन इंडिया. ओके, दैट इज द डिफरेंस. नाउ यूनियन गवर्नमेंट इज पुशिंग टेक जायंट्स टू मेक स्मार्टफोन्स कंपैटिबल विद दिस Navic एंड ऑल. तो यूनियन गवर्नमेंट चाहती है ऐसा करना कि जो भी टेक्नोलॉजी कंपनी है, जो भी मोबाइल फोन बना रही है, वो जीपीएस के साथ साथ मतलब Navic को भी कंपैटिबल हो, यानी Navic भी उसमें चले, काम करे. That is what it says. But they are saying कि perhaps the cost will increase. And when the cost of mobile phones will increase, the competitiveness will decrease. है ना? अगर कोई मोबाइल फोन 10,000 का मिल रहा है, कोई 11 या 12,000 में मिलना शुरू हो जाएगा, तो लोग कम खरीदेंगे ना. So that is what they have said. Okay. So that is what it was in the news. ठीक है, Navic. अब देखो, Navic पर क्वेश्चन आया था, and this is the question that was asked this year in 2022. And that is why I say why reading newspaper is important. आप पूछते हैं ना सर क्यों अखबार पढ़ना जरूरी है, एग्जाम में काम आता है. जो जो आर्टिकल्स आती है उसको आप ध्यान से पढ़ोगे, उसके बारे में सर्च करो. जैसे Navic आ जाए तो आपने Navic के बारे में पढ़ा जाके डिटेल में, तो फिर आपको इसका आंसर मिलेगा, तो फिर एग्जाम में आएगा तो आंसर कर दोगे, राइट. सो दैट इज वाई वॉट एवर थिंग्स आर इन न्यूज, read it carefully, the newspaper articles, topics which are in news, because that will be helpful in the exam. Yes, good, very good. Car Informer, Hariom, Kumar, Harshita, Anushka, and many other people. Ayush, Jay Kesara, Riya Verma, Pallavi, you all are right. So Navic covers India and region extending up to 1500 kilometer. So 1500 किलोमीटर का रीजन इंडिया और 1500 किलोमीटर के रीजन को Navic कवर करता है. So this is the question of this year CLAT 2022. So that what we learned is things which are in the news, chances of being asked is higher. So इसीलिए अखबार पढ़ना, द हिंदू न्यूज़पेपर और एनी अदर न्यूज़पेपर, रीडिंग वन न्यूज़पेपर एवरी डे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, यस गाइस, एवरीवन प्लीज प्रेस द लाइक बटन. वी आर सीइंग 26 लाइक, 45 इज वाचिंग. सबको लाइक बटन प्रेस कर दो. यस, नाउ अब हम लोग चलते हैं एडिटोरियल्स की तरफ. लेट्स मूव ऑन टू एडिटोरियल्स. सो दीज आर द 4 आर्टिकल्स. लेट्स डिस्कस दिस वन, पुटिंग पावर बैक इन द हैंड्स ऑफ पीपल. देखो इस हेडलाइन का क्या मतलब होता है. व्हाट डू यू मीन बाय दिस हेडलाइन? Putting power back in the hands of people. When power is in the hand of people, that is what the democracy is. Democracy का ये definition होता है ना. Democracy का मतलब होता है कि जनता के हाथ में ताकत, right? That is what it says. So he is basically emphasizing on strengthening democracy. यानी डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को मजबूत तभी होता है जब जनता के पास ज्यादा से ज्यादा ताकत हो, पावर हो, वोटिंग पावर बेसिकली, rather की रूलर्स के पास, right? So very similar to that, there is a quote. I want to ask, this quote was given by whom? Who said democracy is the government of the people, for the people, by the people? Who had said this? Yes. It's very famous actually. He was a very famous personality. He had once said, yes, Sonal Upadhyay has answered it. Very good. Mr. Abraham Lincoln, the former US president, had said this. That democracy is of the people, for the people, by the people. इसका मतलब है कि democracy is a form of a government which empowers common people, है ना? Empowerment of common man. ठीक है, this is the difference between kingship and common man. Kingship and democracy, because in democracy people elects prime minister, CM, MP, MLAs. So the real power is with the people who actually elect them, है ना? That is what the idea is. I know from my 6th standard. Very good, Preeti. So that is what he is basically, the author is highlighting. Before moving on, एक छोटा सा small announcement है. This is the announcement that from 23rd September till 2nd October we are having a mega mock test series. देखो actually क्या होता है, बच्चे complete नहीं करते हैं. This is the problem. We have got to know from the administrative team कि जो बच्चे मॉक टेस्ट देते हैं, बहुत सारे बच्चे आधा छोड़ते हैं, आधा कंप्लीट करते हैं, पूरा कंप्लीट टाइम नहीं देते हैं. So they do not give the entire 2 hours. Sometimes they do it in 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, कुछ आधा करके छोड़ देते हैं. Please do not do this. मॉक एग्जाम को आप रियल एग्जाम की तरह इमेजिन कीजिए. Then only it will be beneficial. Imagine that yes, you are sitting at the examination,
कोई चीटिंग नहीं करना है, कोई इधर उधर गूगल सर्च इधर उधर से नहीं चेक करना है। 2 घंटे में हमको जितना आता है उतना अटेम्प्ट लेना। प्लीज डू इट कंप्लीटली एंड डू नॉट स्किप इन द हाफ कि आधा करके निकल लिया। यस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दैट इज व्हाट वी आर highlighting it because we are working hard, so we expect you that you should also be performing it better. हाँ पूरा आपने पूरा दियोगे साक्षी, but there are people who are not doing it. That is why we are saying 45 plus marks covering all. Yes, we are having on BYJU'S exam prep app 45 plus marks, unlimited access to 20 CLAT and 25 non-CLAT mock tests, 9,000 plus practice questions, mock analysis based on actual exam pattern, etc. So download our BYJU'S exam prep app also, है ना, and join us. Now अब हम लोग चलते हैं, जो मेन एडिटोरियल आर्टिकल है उसको डिस्कस करते हैं। पुटिंग पावर बैक इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। सो ही इज बेसिकली कंसर्न अबाउट डेमोक्रेसी, इनरिचिंग डेमोक्रेसी। सो ही सेज अ वर्ल्ड बेरिफ्ड, बेरिफ्ड मतलब क्या होता है, वेयर देयर इज शॉर्टेज, कमी या ना होना, है ना। बेरिफ्ड ऑफ एन इंक्लूसिव ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ ट्रस्ट इज अपॉन अस। इंक्लूसिव ग्लोबल कम्युनिटी, इंक्लूसिव वर्ड कम्स फॉर दोज, इट मीन्स पार्टिसिपेशन ऑफ वीकर सेक्शन। इंक्लूसिव का ही मतलब होता है, यानी ऐसी गवर्नमेंट हो या ऐसा कंट्री हो जिसमें सबसे कमजोर से कमजोर तबके का भी भला हो रहा हो, राइट। सो इवन द वीकर सेक्शन, द वुमेन, चिल्ड्रन, माइनॉरिटीज, फिजिकली डिसेबल्ड, these people should also be the part of a democracy, the part of the development process. This is what we use the word inclusive. ठीक है, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि बेरेफ्ट यानी पूरी दुनिया में अभी भी ऐसा नहीं है कि ग्लोबल इंक्लूसिव ग्लोबल कम्युनिटी हो। रेशियल जेनोसाइड्स थ्रू द हिस्ट्री, blatant fascist leaning of so-called democracies and escalating hunger and disease in Africa and other parts of underdeveloped country would give enough evidence. तो ये कहना चाह रहे हैं कि रेशियल जेनोसाइड यानी नस्ल के नाम पर लोगों का कत्ल हुआ पहले भी हिस्ट्री में। ब्लैटेंट फैसिस्ट लीनिंग ऑफ द सो कॉल्ड डेमोक्रेसीज, तो ये कह रहे हैं कि जो फैसिस्ट आइडियोलॉजी यानी राइट विंग आइडियोलॉजी है, जो उनका कहना है ऑथर के हिसाब से, डेमोक्रेसी में भी पूरी तरह स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी नहीं है। हंगर इश्यूज है, खास के अफ्रीका में, डिजीज, a lot of disease problems are there in Africa, hunger issues are there still in the world, अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड यानी अभी भी बहुत सारे ऐसी कंट्री जो डेवलपमेंट नहीं है, लोगों को खाना तक नहीं नसीब होता है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ व्हाट आई एम सेइंग दिस। तो जो वो कह रहे हैं, जो ऑथर कह रहे हैं कि हम क्यों कह रहे हैं कि इंक्लूसिव ग्लोबल कम्युनिटी वर्ल्ड में नहीं है, उसका एग्जांपल यही है। दैट इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग। ओके, इज इट क्लियर? व्हाट इज दैट इज व्हाट ही सेज। नाउ फर्दर ही सेज, तो उन्होंने कुछ एग्जांपल भी दिया। द कांग्रेस पार्टी इज हैविंग भारत जोड़ो यात्रा इन इंडिया। Then he has given some more quotes of Arundhati Roy, etc. Question we have asked, etc. and all. So that is what he, the author is giving some example of, I can say, promoting rationalism, etc. उसमें उन्होंने एक चीज डिस्कस किया है, and he has talked about 2022 resilient democracies statement. This is important. Star market. This is. It was signed recently by G7 and 4 invited guests. Okay. तो G7 और 4 जो उनके इनवाइटेड गेस्ट थे, उन लोगों ने मिलकर 2022 रेजिलिएंट डेमोक्रेसी स्टेटमेंट को साइन किया। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? समवन इज आस्किंग पॉपुलिज्म, कहां लिखा है? पॉपुलिज्म मतलब ऐसी पॉलिसी लेना जिससे लोग बस खुश हों और लोग की भलाई के लिए नहीं हो। दैट्स कॉल्ड पॉपुलिज्म। पॉपुलिस्ट मेजर कहा जाता है ना, कि पॉलिटिशियंस आर टेकिंग दैट मेजर। फ्रीबीज जैसे बांट रहे तो बहुत से लोग कहते हैं कि पॉपुलिस्ट मेजर है, खाली मतलब बेनिफिट होगा लोगों को कि लोग खुश होंगे, लेकिन सब्सटेंशियली समाज में बेटरमेंट नहीं होगा। दैट्स कॉल्ड पॉपुलिज्म। ठीक है सोनल, है ना? आई थिंक इट्स क्रिस्टल क्लियर। सो बेसिकली वी आर कंसर्न अबाउट 2022 रेजिलिएंट डेमोक्रेसीज स्टेटमेंट। नाउ देखो ये है, दिस इज फ्रॉम द आवर ऑफिशियल्स एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री वेबसाइट, इसलिए मैंने देखो लिंक भी दे दिया है ना। तो ये फॉरेन मिनिस्ट्री की, इंडिया के फॉरेन मिनिस्ट्री की वेबसाइट है, उसमें भी ये मेंशन्ड है। देखो 30 जून 2022, मतलब 1-2 मंथ्स बैक वी आर डिस्कसिंग अबाउट इट। तो इसमें क्या बात हो रही है? जॉइंट स्टेटमेंट ऑफ G7 एंड पार्टनर कंट्रीज 2022 रेजिलिएंट डेमोक्रेसीज स्टेटमेंट। तो इसमें क्या लिखा? वी हेल ऑल करेजियस डिफेंडर ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम एंड स्टैंड अगेंस्ट ऑपरेशन एंड वायलेंस एंड विल स्टेप अप इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू इंप्रूव रेजिलियंस ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटीज। मतलब यह है कि हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, G7 नेशंस और भी जो उनके पार्टनर नेशंस हैं, जिसमें इंडिया को भी बुलाया गया था, है ना, देखो यहाँ पे, है ना। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी स्ट्रेंथन हो। मतलब यह है कि डेमोक्रेटिक आइडियाज, वैल्यूज को स्ट्रेंथन किया जाए अपने अपने मुल्कों में और पूरे वर्ल्ड लेवल पर। दैट इज व्हाट
द रेजिलिएंट डेमोक्रेसी स्टेटमेंट इज। तो इसे पूछ सकते हैं कि रेजिलिएंट डेमोक्रेसी स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुपिंग, G7, G20, SCO, ब्रिक्स, इस तरह का दे कैन गिव क्वेश्चंस। फिर आपको सोचना होगा वहां पे एग्जाम में, तो इसीलिए आप पहले से ये सब पढ़ के रखिए, ठीक है। यस एवरीवन प्लीज प्रेस द लाइक बटन, वी आर सीइंग 33 लाइक्स, 47 इज वाचिंग, सबको लाइक बटन प्रेस कर दो फटाफट। यस नाउ द नेक्स्ट ही इज टॉकिंग अबाउट, ही इज कोटिंग भीमराव अंबेडकर हियर, and this is the very important thing. He's quoting political democracy cannot last unless and until it lies at the base of its social democracy. ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है सर, ये बहुत जगह एग्जाम में अगर आप ऐसे कभी राइटिंग होती है ना उसमें भी ये पूछा जाता है, ऐसे राइटिंग में व्हेन यू गो इन फ्यूचर, कहीं एग्जाम में सिविल सर्विसेज में अदर प्लेसेस में जब ऐसे कंपटीशन होता है, दे गिव दिस टॉपिक, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट unless it lies at the base of its social democracy. Political democracy और social democracy में what is the difference? So when I use the word political democracy means election, normal election हो रहा है तो that's political democracy. But when I use the word social democracy, इसका क्या मतलब रहता? Means whether society is strengthening the weaker sections or not, यानी कमजोर section. Because yes, Bhimrao Ambedkar was Dalit, he was fighting for the rights of the Dalit. So he focused on social democracy more than political democracy. मतलब सिर्फ वोटिंग राइट्स मिल जाना ही जरूरी नहीं है, सोशल डेमोक्रेसी होना चाहिए, यानी कि जो गरीब से गरीब तबका है उसका एम्पावरमेंट होना चाहिए, जो जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, दलित हैं, उसके पास बेयर मिनिमम रिस्पेक्ट होना चाहिए, ठीक है, लोग उसको रिस्पेक्ट की नजर से देखें, उनके पास बेसिक बेयर मिनिमम नीड्स हो, उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, देयर शुड नॉट बी एनी अनटचेबिलिटी टुवर्ड्स पुअर्स, वीकर्स, माइनॉरिटीज, दलित्स एटसेट्रा। दैट इज व्हाट द आइडिया ऑफ सोशल डेमोक्रेसी इज। यस, इगैलिटेरियनिज्म हो, सोशल वेलफेयर, करेक्ट करेक्ट, हाँ। सो दैट इज व्हाट द रियल आइडिया ऑफ अ डेमोक्रेसी इज, व्हिच हैज बीन कोटेड बाय द ऑथर, ठीक है। चलो, सो बेसिकally he was concerned about strengthening democracies and all. Now let's talk about another one, home and abroad. And this is an article which is talking about if India is to unite polarized nation, it must bring divisive forces under control. So basically, the author is talking about recent UN General Assembly in recent UN General Assembly, India's statement or Foreign Affairs Minister's statement of several challenges in India's past, present and future. So जो हमारे भारत के फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, उन्होंने कई सारी बातें कही यूएन जनरल असेंबली में, उसमें जो है कि क्या क्या चैलेंजेस हैं अभी, पहले क्या क्या चैलेंजेस थे, अभी क्या क्या चैलेंजेस हैं और फ्यूचर में क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। सो यस, विद अ स्पेशल एम्फेसिस ऑन इमीडिएट शॉक्स अराइजिंग ड्यू टू यूक्रेन, कोविड पैंडेमिक, क्लाइमेट चेंज एंड टेररिज्म। तो ये मेन 4 बातें उन्होंने कही हैं कि जो मेन शॉक्स अभी 4 है, पहला है रशिया यूक्रेन वॉर, दूसरा है कोविड-19, तीसरा है क्लाइमेट चेंज यानी ग्लोबल वार्मिंग एटसेट्रा, और चौथा है टेररिज्म। यानी ये 4 बड़े शॉक्स के बारे में, यानी कि जो 4 सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, द 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स दैट वी नीड टू टैकल एट द इंटरनेशनल लेवल आर दीज 4, ठीक है, एम्फसाइज्ड बाय फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, ठीक है। ही इज 77 जनरल असेंबली, करेक्ट, मुस्कान देवदत्त, राइट, हाँ। Then actually nor did he mention direct, तो फिर then he is talking about that Mr. Jaishankar did not comment directly about Pakistan, nor did he mention about LAC issue and all, although he criticized China's habit of politicizing and blocking UN Security Council terrorist designation. तो ये बात कही जा रही है कि जयशंकर साहब ने पाकिस्तान का भी नाम नहीं लिया, नो डायरेक्ट कमेंट हुआ, ना ही कोई डायरेक्ट कमेंट किया, ना LAC के बारे में कहा, लेकिन चाइना की ये वाली बात पर जरूर कहा जिसमें चाइना जो है किसी को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करने में ब्लॉक कर देता है, ये वीटो यूज कर देता है। दैट इज व्हाट ही हैज डिस्कस्ड। ये मैंने कल भी डिस्कस किया था इन यस्टरडेज क्लास आल्सो अबाउट चाइना ब्लॉकिंग, आई थिंक साजिद मीर और समथिंग वाज नाम, आई डोंट रिमेंबर द नेम, फ्रॉम ब्लॉकिंग फ्रॉम डेजिग्नेटेड एज टेररिस्ट, है ना। यस्टरडे वी हैड डिस्कस्ड अबाउट इट, तो कल का आप वीडियो जरूर जाके देख लीजिए। खैर, सो दैट इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। देन पीएम मोदीज स्टेटमेंट ऑन एरा ऑफ वॉर इज ओवर हैज बीन हाईलाइटेड। यस, तो पीएम मोदी ने कहा भी था कि एरा ऑफ वॉर इज ओवर, आई थिंक रिसेंटली कहा था कि बेसिकली दिस इज एक्चुअली डायरेक्टेड टुवर्ड्स रशिया यूक्रेन वॉर, ऑल्दो नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली, हाँ, कि जंग का जमाना खत्म हो गया है, अब हम लोग को जंग करना नहीं है, ठीक है ना। दैट इज व्हाट इट्स बीइंग टॉक्ड अबाउट। Then other things are being talked about is escalating cost of food, of fuel, fertilizer, etc.
देखो जब से कोविड-19 हुआ है, रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है, ऑफ कोर्स थिंग्स हैव गॉट डिस्टर्ब्ड, सो प्राइसेस ऑफ फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर हैव इंक्रीज्ड। तो जब भी खाने का दाम बढ़ेगा तो सबसे पहले द वीकेस्ट वन विल बी अफेक्टेड। जो अमीर आदमी हो तो खरीद लेगा, चलो 20 रुपए की जगह 50 रुपए में मिलेगा। जो गरीब है उसको लिए 20 से 30 भी होना बहुत महंगा हो जाता है। So yes, the poor people are the worst victim of these Russia-Ukraine war or COVID-19, etc. and all. That is what is being talked about in detail. है ना? हाँ, at SEO meeting summit. Yes, Sakshi. हाँ, correct. हाँ. Now, Jaishankar hailed that he called New India under PM Modi, spelling out 5 pledges. देखो ये मैंने डिस्कस कराया था. I still remember. 15th अगस्त को PM Modi talked about पंच प्राण, यानी 5 प्लेजेस, 5 प्लेजेस या 5 कसम कह सकते हो कि 2047 तक हम लोग को ये फॉलो करना है इन द नेक्स्ट 25 इयर्स। तो दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, राइट? आई डिस्कस्ड इट ऑन द नेक्स्ट डे इन द हिंदू क्लासेस अबाउट पंच प्राण एंड ऑल, है ना? तो इंडिया इज रेडी टू टेक द इनहांस रिस्पॉन्सिबिलिटी एटसेट्रा एंड ऑल। तो इसी की बातें एस जयशंकर साहब ने उसको रिपीट किया पंच प्राण को। द नेक्स्ट इज, आई होप यू आर अवेयर दैट इंडिया इज गोइंग टू बी द होस्ट इन ऑफ G20 समिट नेक्स्ट ईयर, है ना? सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड कीप इन माइंड। नाउ चलो अब ये दोनों है, एक ये आर्टिकल है पिचिंग इंडिया एज अ सिग्नेचर डेस्टिनेशन। ओके, दिस इज रिलेटेड विद टूरिज्म, so that is why I'm asking questions about it. This is a question in front of you and it says, on which date World Tourism Day is celebrated? It's 26 September, 27, 28, 29. देखो इस तरह क्वेश्चन लास्ट ईयर आई थिंक CLAT 2021 में सिमिलर क्वेश्चन वाज आस्क्ड, राइट? डेज एंड थीम्स पूछते हैं ना, सिमिलर क्वेश्चन। सो दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन कि वर्ल्ड टूरिज्म डे कब है? यस, एक्चुअली वो आज है। यस, वेरी गुड, गुड। साक्षी, शिवम, मुस्कान, हरिओम, देवाद्रिता, शमिष्ठा। सम पीपल अप्लाई द लॉजिक कि सर आज पढ़ा रही हो तो आज ही होगा, है ना? यस, करेक्ट, इट इज टुडे, इट्स 27 सितंबर। बट एग्जाम में तो आपको याद रख के जाना होगा डेट, ठीक है? बिकॉज दे हैव आस्क्ड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन लास्ट ईयर, डेज, थीम्स एटसेट्रा। सो चांसेस ऑफ गेटिंग आस्क्ड अगेन इज हायर, है ना? तो बहुत सारे चांस है कि दोबारा पूछा जाए, ठीक है? सो यू कैन सी इट हियर। So basically he's talking about, the author is talking about the Dharmashala Declaration, ठीक है? And on the occasion of World Tourism Day, that is 27 September, I am happy to share this collective vision. Dharmashala Declaration aims to recognize India's role in contributing towards global tourism as well as focusing on recovery by promoting domestic tourism, ठीक है? अब देखो इससे पहले फर्स्ट आई एम आस्किंग द क्वेश्चन, फर्स्ट आंसर इट, देन आई विल एक्सप्लेन। दिस इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू एंड इट सेज हु अमंग द फॉलोइंग इज द मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म? मिस्टर हरदीप सिंह पुरी, जी किशन रेड्डी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नन ऑफ द अबव। यस, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको याद होगा लास्ट ईयर द क्वेश्चन आस्क्ड वाज हु इज द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ अफेयर्स, राइट? हेल्थ मिनिस्टर वाज आस्क्ड। हाँ, yes, Dharmashala Declaration is important. Yes, Sakshi. Yes, so it is actually G Kishan Reddy. The answer of Minister of Tourism is G Kishan Reddy. Last year this question was asked. पिछले साल ये सवाल पूछा गया था कि Minister of Health and Family Welfare कौन है? So the answer was Mansukh Mandavia. ठीक है? So you should be knowing that which type of what type of pattern they are asking. किस तरह से सवाल पूछ रहे हैं, उसी तरह से उसी पैटर्न पर आपको तैयारी करना है, राइट? So why I am saying so? देखो he is Mr. G Kishan Reddy and he is Minister of Tourism. और उन्होंने ये आर्टिकल लिखी है. If you see it, this G Kishan Reddy has written the article. So the minister himself has written this article. तो मंत्री साहब ने खुद ये आर्टिकल लिखी है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? तो जैसे some people are asking, सर धर्मशाला डिक्लेरेशन, yes it is important, ठीक है? धर्मशाला डिक्लेरेशन affirms to make India global leader in tourism by 2047. तो एक्चुअली why it is being discussed? देखो ये अभी है ना 21 सितंबर को, अभी रिसेंट इवेंट है ये। So yes, that is what. So basically, Dharmashala Declaration is to promote tourism in India. इस तरह क्वेश्चन आ सकता है कि Dharmashala Declaration is associated with what? They'll be giving you 4 options. So you should focus on tourism sector. ठीक है? That is what the idea is. Especially why? Because of affected global tourism has been affected because of COVID etc. जब COVID-19 हुआ था तो सबसे ज्यादा टूरिज्म पर असर पड़ा था, बोथ इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल, है ना?
So that is why we need to reinvigorate it, इसको फिर से जिंदा करना है, ताकि टूरिज्म से बहुत सारे लोगों को क्या होता है, टूरिज्म लीड्स टू व्हाट, इट क्रिएट्स जॉब, है ना, जॉब, जीडीपी, वहां पे लोग जो रहते हैं, जहां पे हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन में जाते हैं, वहां पे लोग खाते हैं, होटल चलता है, वहां के लोग रहते हैं, रेस्ट हाउस चलता है, वहां के लोकल बिजनेस फ्लरिश करता है ना. यस, दैट इज व्हाई इट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट. देयर इज अ स्कीम कॉल्ड एज एक भारत श्रेष्ठ भारत. इसको आप थोड़ा सा पढ़िएगा. It is also related with promoting culture and tourism in the world, in India, sorry, in India. ठीक है. So mutual interaction with different people of different region of India. That is the idea of एक भारत श्रेष्ठ भारत. हाँ. Then he is talking about national tourism policy also has been drafted. तो इसको भी थोड़ा सा go and read something about national tourism policy, because देखो ये last to last year CLAT 2020 में national education policy they gave a passage. ठीक है. At that time in 2020 national education policy was in news, so they gave on a question on that. Similarly अभी जैसे national tourism policy news में, so you should be knowing about it, go and read about it, है ना. Okay, now at the last he's talking about that India is going to be the G20 member, G20 president from December this year, है ना, for the next 1 year. So G20 का president रहेगा India. Second thing, so लोग आएंगे, of course more foreign dignitaries will be coming to India, right? Because India is a G20 leader or chairman for that 1 year. ठीक है. So we need to promote more tourism, ताकि बाहर से लोग आए हमारे यहाँ भी. सिर्फ हम ही लोग बाहर ना जाए, वो लोग भी हमारे यहाँ आए, ताकि हमारी कंट्री जीडीपी प्रॉस्पर करे. Yes, we need to promote our own tourism, right? To promote GDP, employment, etc. And he is referring to an age-old dictum of Atiti Devo Bhava. आप जानते होंगे, it's very famous quote, है ना. So that is what is being highlighted. Okay, yes. Now talking about the next one is देखो ये जो side वाली article थी, the same thing we have already discussed it. Is basically is talking about the new Prime Minister of Italy, which according to many authors are saying that it is their far right, or you can say the right wing ideologies and all people. Her name, the new Prime Minister, would be Giorgia Meloni, and she will be the first after Benito Mussolini to have the same similar ideologies coming to power. That is what is being highlighted. आप समझिए, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं शुरू में क्लास के, ठीक है, कि तो इसीलिए हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं फिर, है ना. यू कैन सी आफ्टर बेनेटो मुसोलिनीज 1945 के बाद फर्स्ट टाइम दिस न्यू फैसिस्ट पार्टी विल बी कमिंग टू पावर. ओके, यस, एक स्मॉल अनाउंसमेंट है. द स्मॉल अनाउंसमेंट इज दैट फ्रॉम 2 अक्टूबर विल बी हैविंग अ क्रैश कोर्स सीरीज चलेगा यूट्यूब पर ऑन आवर यूट्यूब एवरी मंडे, वेंसडे, फ्राइडे एंड संडे एट 9 PM. So please do subscribe to our channel. हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, so that whenever we will be coming up with such content, you will get to know. Okay, then here it is talking about Samarkand, the miniature of an emerging world. आपको पता होगा, I hope you are aware that in Samarkand recently SCO summit happened, Shanghai Cooperation Organization summit, है ना, और इसमें 8 members थे. One thing I want to clarify is that Iran is still not a part of SCO. ठीक है, आप देख सकते हो इसमें 3, 3, 6, 2, 8 मेंबर्स हैं. सो दीज आर द मेंबर्स फोटो. जो मैंने कल फोटो दिखाई थी उसमें और ऑब्जर्वर्स वगैरह सबकी फोटो थी, बट ये 8 मेंबर्स हैं. ओके, नाउ इन 8 में से 9वें मेंबर जो है, देखो दीज आर द 8 मेंबर्स, बट ईरान इज स्टिल एन ऑब्जर्वर. इट इज गोइंग टू बी विल बिकम द मेंबर सून, लेकिन अभी मेंबर हुए नहीं है 9th. ठीक है. सेकेंड थिंग इज that currently India is the chairman or head of Shanghai Cooperation Organization also. इंडिया जो है SCO का भी हेड है. ठीक है, तो मोस्ट लाइकली कि ईरान जो है उसी टाइम पर जब इंडिया हेड रहेंगे, यानी चेयरमैन है, तभी जो है वो लोग ईरान जो है मेंबर बनेंगे. सो दैट इज व्हाई इट विल बी मोर इंपॉर्टेंट. लेट्स सी कब बनते हैं, तो उसको हम लोग फॉलो करेंगे. यू नीड टू फॉलो दिस. ठीक है. So that is why he's talking about, the author is talking about the recent SCO summit happened in Samarkand. इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे the main issue was actually invasion of Russia's invasion of Ukraine, etc. and Russia-China deal on Taiwan issue, etc. and all. So basically जैसे कि आपको पता होगा, पहला तो ये है कि रशिया का जो यूक्रेन में इन्वेजन हुआ वो एक बहुत बड़ा समस्या था, मेन इंपॉर्टेंट थिंग था. That was, I can say, being discussed. Then second thing was कि Russia and China actually have ties.
टू काउंटर ताइवान। तो आपको पता होगा कि ताइवान इशू एंड ऑल हैपेंड, नैंसी पेलोसी यूएस स्पीकर, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव स्पीकर केम टू ताइवान एटसेट्रा ऑल, ये सब चीज आपको पता होगी। तो उसके बाद रशिया और यूक्रेन के टाइज और मजबूत हो गए ताकि ताइवान को काउंटर करने के लिए, बिकॉज ताइवान इज बेसिकली बैक्ड बाय यूएसए एंड ऑल, ठीक है। सो दैट इज व्हाई इट इज बीइंग डिस्कस्ड अबाउट इट, है ना, ये चीज उन्होंने यहाँ पर डिस्कस किया है। ओके, नाउ रशिया's president Vladimir Putin got away by saying that he understood India's concern over war in Ukraine, promising to try and end the conflict but blaming Ukraine government for prolonging the crisis. तो एक्चुअली क्यों, अभी रिसेंटली पीएम मोदी हैड सेड, यूज दिस वर्ड नॉट एन एरा ऑफ वॉर, यानी अभी जो आज का जमाना है वो जंग का जमाना नहीं है। ओके, यस, नाउ इसके उन्हीं के रिस्पॉन्स में व्लादिमीर पुतिन सेड कि यस आई अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम और कंसर्न ऑफ इंडिया, बट अकॉर्डिंग टू व्लादिमीर पुतिन इट इज यूक्रेन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोलॉन्गिंग द वॉर। तो यूक्रेन रशिया पुतिन का ये कहना है कि इन्हें यूक्रेन के कारण जंग जो है लंबी हो रही, दैट इज व्हाट the Vladimir Putin has said. Okay, that is what is being mentioned. Then यहाँ पर एक और चीज डिस्कस था, Samarkand summit presented miniature in the world that may emerge in the future, demonstrated to us where we should stand right now, etc. and all. So as chairman of SCO, ये याद रखना है, the current chairman of SCO is India. India cannot transform it from within because China, Russia, Iran, Pakistan axis will dominate it. ठीक है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि चाइना, रशिया, ईरान, पाकिस्तान एक्सिस बन रहा है। So let's see whether it is it's that much okay or correct or not. ऐसा कहा जा रहा है बहुत सारे फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स की चाइना, रशिया, ईरान, पाकिस्तान एक्सेस इज इमर्जिंग एटसेट्रा, बट लेट्स सी वेदर इट्स ट्रू और नॉट। ठीक है ना, ठीक है ना, ओके, यस। So in general he is talking about the you can say events associated with Samarkand SCO summit etc. and all. ठीक है। The next, there was an article in The Hindu talking about push for semiconductor industry. So I hope you are aware, this is called as integrated chip. ये आपने सुना होगा, इसको हम लोग IC chip कहते हैं, है ना, या माइक्रो प्रोसेसर, you must have heard about it, है ना। And this is called as motherboard, है ना, ये आपने सुना होगा, have you heard about this motherboard? This is called as motherboard. So if you have seen any computer, if you have opened any computer, जैसे ये है, this is called as motherboard, right? So इसमें बहुत सारे chips लगे होते हैं ना, there are lot of chips, integrated chips. So these are being made with the help of semiconductor. Semiconductor से ये सब बनता है, ठीक है ना। So generally we import semiconductor. अभी जो है हम लोग semiconductor को import करते हैं from foreign nation. But the idea is to make in India, ठीक है ना, कि semiconductor को अपने ही country में बनाया जाए, ठीक है ना। Last year in December, we had talked about $10 billion production-linked incentive scheme to encourage semiconductor and display manufacturing. कि इंडिया में इंटीग्रेटेड चिप्स, सेमीकंडक्टर्स वगैरह बने ताकि हमको इंपोर्ट नहीं करना पड़े। पहली बात तो मेक इन इंडिया, सो उस दूसरी बात है कि इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा, हम लोग को बाहर पे नहीं करना होगा। मेक इन इंडिया होगा तो उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। बट लेट्स सी, इट शुड बी मेड सक्सेसफुल, है ना, ये आइडिया बहुत अच्छा है, इट शुड बी मेड सक्सेसफुल। So, उसको आप पढ़िएगा जाके थोड़ा। फिर पेज 10 में एक और आर्टिकल थी, छोटी सी स्मॉल आर्टिकल, पीएम मोदी लीव्स फॉर जापान फॉर शिंजो अबे's फ्यूनरल। शिंजो अबे वाज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, आई होप यू आर अवेयर, 2-3 months बैक ही वाज असैसिनेटेड। तो अभी तक, अब जाके शायद फ्यूनरल होगा, तो इसीलिए पीएम मोदी भी उसमें जाएंगे। ओके, जस्ट हैव एन आइडिया। यस, देयर इज अ रिक्वेस्ट गाइज दैट we are having a mega mock, CLAT mega mock from 23rd September to 2nd October, ठीक है। प्लीज कंप्लीट दैट मॉक। कुछ लोग ज्वाइन करते हैं, आधा छोड़ के चले जाते हैं, प्लीज डू नॉट डू दिस, इससे आपका ही नुकसान होगा, यू विल बी एट लॉस। जब भी आप मॉक टेस्ट दे, ये सोच करके दे कि हम एग्जाम एटमोस्फेयर में बैठे हुए हैं। प्लीज बिलीव दैट आई एम सिटिंग इन एग्जामिनेशन एंड अटेम्प्टिंग इट, देन ओनली यू विल मेक बेटर परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन। तो मॉक टेस्ट इसलिए जरूरी होता है ताकि आपका बेटर परफॉर्मेंस हो सके एग्जाम में, पहले से बहुत सारी प्रैक्टिस रहेगी। तो ओके, दैट इज व्हाट द आइडिया इज। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, follow us on Instagram, Facebook, Telegram, and download the BYJU'S exam prep app. Thank you everyone, thanks for watching. Please press the like button guys, we are seeing 36 likes, 47 is watching, सबको like button press कर दो, share this video, subscribe to our channel. Thank you everyone, thanks for watching, have a nice day.